Hi, this is Shahid Kapoor. Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. फर्जी शाहिद इस वक्त इतने सक्सेसेस के बाद सेलिब्रेट कैसे करता है? क्या वो टी शर्ट उठा के ऐसे फेंकता वूहू या फिर कोने में बैठ के वापस ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है? नहीं, I just feel a lot of gratitude. मुझे बहुत I feel very fortunate और मैं I like to be with my people. जो मेरी फैमिली है, जो मेरे दोस्त हैं. I want them to see and share that happiness that you have in your eyes and that smile that comes on your face and that elevated feeling of satisfaction that you get. I want to share that with the people who stood by me. जो मेरे साथ खड़े रहे जब वो नहीं हो रहा था. They deserve to be there. I want them around me at that time, and I would be around them at a moment of time in their life when they are feeling like that and with them. So, the people who matter. Years down the line, भाई साहब ने 20 साल खत्म कर लिए भाई. क्या फ्लैशबैक सारे मेरे दोस्त. उसके बाद तूने बताया कि तेरे 29 years हो गए. अभी मैं छुपाने की मैं कोशिश तेरा कर रहा इंटरव्यू लेता हूँ. 29 years के बाद सिद्धार्थ कन्नन आपको कैसा महसूस हो रहा है? यार मुझे क्या महसूस हो रहा है कि I have to up my game, keeping my energy in mind, keeping Shahid's energy in mind यार. But by God बोल रहा बड़ा मजा आ रहा है तब भी. Thank you. But कभी-कभार लगता है थोड़ा स्लो डाउन करें, बट ठीक है. नहीं, स्लो डाउन स्ट्रक्चर चाहिए मुझे. ऐसा लगता है कि हर चीज का लाइफ में एक टाइम होता है. हाँ. ये टाइम पे ये होना चाहिए, ये टाइम पे ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है. सो यू हैव टू एडजस्ट. पर मैं एक चीज नोटिस किया, और ये इतने सालों में यू बिकम अ लॉट रिलैक्स विथ योर ओन सेल्फ. इज इट ट्रू? 100%. है ना? 100%. पहले तुम्हारे अंदर थोड़ा वो रेस्टलेसनेस था. वो कैसे तुमने टर्न कर दिया टू दिस काम? अभी भी है, आता है. You have to learn to just deal with yourself in a better way and give yourself the right messaging. वो एक कौन सी फिल्म थी वो? Bad Boys में था ना, whosa. So you have to just do that. But I think inherently also, as I've grown older, I have learned to be more calm because I feel I'm a better version of myself like that. And I'm always chasing that in life. I'm always chasing being a better version of myself every day of my life. That's very important for me. If I've not added any value to myself, if I've not learned something new, I feel like it's a wasted day. So I think that journey has helped me be a better version of myself. In fact, मैं राशि से कुछ दिनों पहले बात करता हूँ. राशि ने मुझसे बोला कि you know what, शाहिद जब अपने बच्चों के साथ बात करता है ना फोन में, तो इतने प्यार से कामली बात करता है. बच्चे लोग भी करवा देते हैं भाई. क्या बोल रहे हो? नहीं, बच्चों के साथ मुझे ऐसा फील होता है, बच्चे जो होते हैं they are just like a blank piece of paper. So whatever you write on it, that is what it will become, especially at a younger age. So I feel it's very important what energy you give the children. I always feel it matters a lot. So I try to be particular about it. In fact, देखा जाए, you started off as a background dancer शामा के साथ. Everybody knows that, right? उसके बाद जब तुम आए, म्यूजिक वीडियोस हुआ, आंखों में तेरा ही चेहरा, यूनिवर्सल म्यूजिक वगैरह वगैरह. Then you were called as this chocolate boy hero. रोमांटिक करेगा लड़का, क्यूट सा है, प्यारा सा है. But over a period of time, तुमने बहुत सारे gutsy decision लिए. If I told you वो 2-3 decisions जो तुमने लिए, तो शायद वाट लग जाती if it didn't do well. Sure. What were those भाई? कमीने. And I think वो मेरा decision नहीं था, वो विशाल सर का decision था. That's it. That was where I was able to do something that was completely contrary to what people thought I can do and the image that people had or the expectations that people had. So that credit goes to Vishal sir. He was the reason why I was able to jump out of the box that everybody was trying to put me into. मैं तो कहूँ even पद्मावत. पूछो क्यों? मैं बताता हूँ. मुझे क्या लगा कि सबको लग रहा था, you know what, Shahid is like the supporting hero. सबको लग रहा था it'll be a Ranveer Singh film. And you came out on your own. You held your own ground. People film के बाद were talking Shahid. Though Ranveer was also very great. Yeah, he was amazing. But confidence चाहिए था to pick a role like that. Do you feel भाई? मैंने वो सिर्फ संजय सर ने मुझे कहा कि ये कर लो, तो मैंने कर लिया क्योंकि मुझे उनका काम बहुत पसंद है. बस
वही रीजन था, और कोई रीजन नहीं था। तो ये नहीं मायने रख रहा था कि मेन सपोर्टिंग कुछ नहीं? I didn't do it thinking like that. I just felt he's a fantastic filmmaker and I had loved his work. And, he said, do this. So I said, okay, I'll do it. वाओ! तो माने Yeah. इसको कहते मैंने हैं ज़्यादा दिमाग सरेंडरिंग। नहीं लगाया था उसमें। हाल ही में तुम गए थे जब वी मेट की स्क्रीनिंग में, जी। कैसा लग रहा था भाई? मेरे पास पता नहीं 3-4 दिन से so many people send me so many videos जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं। सो आई वाज़ लाइक यार आई हैव टू, कहाँ चल रही है पिक्चर? बॉम्बे में कहाँ लगी है? सो देन दे टोल्ड मी वो पीवीआर में चल रही है। सो देन दैट डे ओनली आई वाज़ गोइंग, आई थिंक शहज़ादा की स्क्रीनिंग थी वहाँ पे। हाँ। So, Kriti had called me, Karthik had called me, my friend Aman Gill is producing the film, so he had also called me. So I said, I'm going there. So I said, कितने बजे का शो है? Then they told me अभी ये 10 मिनट में शो खत्म हो रहा है. So I just said, I just went inside. I said, I want to just go inside and just like thank all these people. क्योंकि the love that, 20 साल हो गए यार और लोग प्यार दे रहे हैं. It's crazy, 16 years it's been since जब we met. But that's also the magic of Imtiaz Ali, that he made a film which was so relevant. I think there's yet a love story after Jab We Met, which is the kind of love story that I feel is relevant, and fresh and feels like it's talking about us. I don't think a love story like that has come after that. So that's his brilliance and his beauty, and it's his vision that is giving us the love. So we are very thankful to him for that. Like you said, लोग कहते हैं जैसे शाहरुख खान के लिए DDLJ था. Would you call this your? Of course, it's my DDLJ, if you want to put it like that. Although DDLJ is DDLJ for me, I love DDLJ. That when I was growing up, DDLJ was the film that I loved, of course. And I guess for many people, this film at that age gave them that feeling of love. So I definitely feel Jab We Met is an iconic film, without doubt. I mean, it's written all over the wall. इनफैक्ट आजकल से सीक्वल्स का जमाना है. लोग ये भी कह रहे हैं कि we want to see Shahid and Kareena in a sequel of Jab We Met, cut to so many years later. Yeah. क्या कहना? What do you think? Does this thought make you excited? Whether it's a sequel or it's not a sequel, it really depends on the quality of that script. So if there is a script that demands a sequel and I feel is the kind of script that you read and say, man, this will be better than the original, or this can match up to the original, I would do it. But if I feel it's not and I'm just trying to use the brand value of the original thing to do it, then I feel that's काम से गद्दारी होती है. हाँ, then why are you doing it? Don't do it. अगर रीमेक हुआ और तुम्हें लगा करंट लॉट में कौन गीत बन सकता है और कौन आपका रोल कर सकता है, कोई है? I mean, Mira role I can't comment, but I think, Geet, I really doubt anybody else will be able to do that kind of justice. It just sat so well. Yeah. I think all the bachas also still talk like Kareena also, yeah. Yeah. आज की जो generation है, they actually try and imbibe her dialogues. Yeah, because some kind of character traits and behavior, when you watch them at an early age, we have a tendency of imitating, and then it sits in our subconscious, so we don't realize we're imitating, but actually we are, because it's such a strong influence. क्या बात है भाई. हर इंसान के मोमेंट में एक पॉइंट होता है जब बोलता है मैं थोड़ा गिव अप कर रहा हूं. And you've also had your failures too, which have defined you. वो कौन सा मोमेंट था जब तुमने स्लाइटली गिव अप किया और किसी ने आपको पकड़ा और बोला भाई वेक अप, शेक अप, गो फॉर इट? कौन था? नहीं, मैं हमेशा अपने आप को शेक अप करता हूँ. उसका क्रेडिट मैं अपने आप को दूंगा. Pat yourself on the back like this. Honest नहीं, पैट नहीं. Slap yourself and say wake up. क्या कर रहे है तू? देखो, सच यही है बॉस, लाइफ का सच यही है कि एवरीबडी विल बी अराउंड यू, दे विल सपोर्ट यू, लेकिन आपको अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है. जिन लोगों के पास आंखें नहीं होती या सुन नहीं सकते, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं. वो भी अपने आप सब कुछ जिंदगी में करते हैं. तो देयर इज नो रीजन फॉर अस, वी शुड बी थैंकफुल. भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, और अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो क्या फायदा है फिर? बी योर ओन सन. वाओ. डोंट बी द मून. Don't look for somebody's light to reflect on you so that you can be seen. Be your own sun. God has made every human being so beautiful. आपके अंदर वो एनर्जी है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, वो आएगी. वो कौन सा फेलियर था जिसने तुमको हिलाया? Honestly, कुछ तो होगा, एक तो फिल्म होगा where you said हिलाया. एक्चुअली मुझे बहुत दुख हुआ जर्सी जब नहीं चली. मैं हिलाया is not the right word. I know what you mean. But I felt deeply sad because वो मुझे ऐसा लगा वो बहुत खूबसूरत फिल्म थी और वो बहुत टाइमिंग उसकी बहुत ऑफ हो गई, उसकी रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई, लोगों का मूड बदल गया. सो आई थिंक लाइफ एंड ऑडियंस एंड थिंग्स वर नॉट काइंड टू जर्सी. उसके अलावा खराब फिल्म करो, नहीं चले, बड़ी अच्छी बात है. वो जब खराब फिल्म करो और वो चल जाए तो आपको लगता है यही चलता है, फिर आप और कचरा करने लगते हो.
और इवेंचुअली वो दिख जाता है कि आप कचरा कर रहे हो। ब्यूटीफुल अच्छी चीज चलनी चाहिए, यू नो, कि बुरी फिल्म करते हो तो आप वही पकड़ के चलते हो, पर अंदर की वो आवाज फेल हो तो बता जाती है देती तो अच्छा एक टाइट थप्पड़ पड़ता है कि बेटा ये रॉन्ग था, हाँ यार ये रॉन्ग था, पता चल जाता है, यू नो। नहीं तो आपको लगता है यार ये तो चल रहा है, ये करते हैं। You're not convinced about what you're doing, but you're doing it because you're chasing the success behind it. And success chases those who don't chase success. You can't run after success. भाई अगर ये कुर्सियां नहीं होती मैं तेरे गोदी में बैठ के पप्पी दे देता। तू ऐसी देने वाला है, कैमरा ऑन है इसके लिए तू शराफत दिखा रहा है। बट रियली ब्रदर आई लव द इनर वॉइस, जिस तरीके से तुम अपने डायनामिक्स लाइफ के फिगर आउट कर चुके हो। महीने के 1% पेमेंट प्लान में अपने खुद का घर, और वो भी दुबई में। हाँ एब्सोल्युटली भाई, ये नॉर्मल घर नहीं है, 30+ एमिनिटीज वाला घर और साथ में गोल्डन वीजा भी। अरे मामू बना रहे आप? नहीं भाई मामू नहीं बना रहा हूँ, आप आओ तो सही दुबई, देखो मैं देता हूँ कि नहीं आपको। भाई आप तो जादूगर हो यार, एक जादू की झप्पी बनती है। हो जाए भाई। सनी फर्जी में अपने नाना के लिए कुछ भी करता है जी, उसकी इनर आवाज उसको उठाती है और फिर वो रियलाइज करता है कि यार नानू ने जो बोला मैंने उसके हिसाब से नहीं किया जी। पर नानू भी उनको पुश करते हैं कि यार सही काम किया कर। नानू को पता है, आई थिंक डीप डाउन, है ना, नानू जानते हैं कि ये लड़का सीधा नहीं है। ही नोज हिम बिकॉज ही इज सच अ वाइज मैन ना। बट अपने क्या होता है ना, अपनों को प्यार से ही संभालना पड़ता है ना। कई बार अपने ऐसे होते हैं जो उल्टे सीधे हरकत करते हैं, आपको पता होता है ये बंदा कैसा है, लेकिन फिर भी उनको प्यार से झेलना पड़ता है, संभालना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। तो नानू इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी इन सनीज लाइफ। हु इज द नानू इन योर लाइफ? हु इज द नानू इन माय लाइफ? माय ग्रैंडफादर एक्चुअली। आई वाज वेरी वेरी क्लोज टू माय नाना and he passed away when I was 17. But my strongest memories, you know, the building blocks of my personality were laid by him. He was more than a parent to me. He was very, very close to me. So that's why I could relate to the relationship very well. And in the sense, तुम कहते हो तुम्हारे नाना तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड टाइप्स थे? मेरे नाना मेरा सब कुछ थे, मतलब उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया लाइफ में। Wow. But I'm sure he's blessing you from the heavens above, brother. Maybe he's around right now saying, well done, Uttar. I hope he's not stuck here because of me and he's in a great place, you know, somewhere in heaven. But I hope his blessings are always there. He's a magical, I think हमारी जिंदगी में हमेशा एक दो लोग ऐसे आते हैं जो मैजिकल होते हैं, who make you just feel the best things in life or give you the best guidance or fill you with love and positivity. You know, so he was that pillar in my life, and I'm sure we all have that person. In fact, I'm very happy for you. So बहुत समय बाद मैं मीरा से मिला, हम लोग पठान की स्क्रीनिंग में थे या शो चल रहा था हम लोग, and then I suddenly bumped into her and we were chatting. मुझे लग रहा था कि इस लड़की को कोई ऑरा नहीं था about being Shahid's wife, और हालांकि खुद एक एंटरप्रेन्योर है, कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सिंपल थी। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्होंने भी बहुत ग्राउंड किया। 100%. Not just Mira, her entire family. You know, Mira, my father-in-law, my mother-in-law, Mira's sisters, extended family, they are very real, normal people. They don't care beyond the point कि मैं actor हूँ नहीं हूँ. They interact with me as a person, and so that has been like a beautiful thing in my life. शादी करने के बाद मुझे realize हुआ कि जब आप शादी करते हो तो लड़की नहीं, उनकी family भी कितना important होती है, because it's such a big contribution. You know, my children have spent so much time with her family and mine, but a lot of time with her family, right? So, I mean, you want the best people around, and I feel they really are the best people. In fact, talking about that, ईशान मुझे थप्पड़ मारेगा। जैसे वो तुम स्माइल करते हो ना, ग्रीट करते हो, जब तुम बदमाशी वाले मोड में रहते हो, जैसे तुम मेरी फिरकी लोगे बाद में, अभी तो अच्छा डिसेंट बॉय है, पर जब मेरी फिरकी लेता है, जो इसे ब्रो तू जैकेट पहन के आया है, वेट पुट ऑन किया है, तो मैंने कहा साला यही है। तेरे जैकेट को देख के बोला कितना गुड लुकिंग लग रहा है तुझे जैकेट। और वो लड़का भी तुम्हारी तरह बिग ब्रदर मुझे बोलते हैं, वही स्माइल वैसे ही। और उसने मुझे एक बार बोला, यार एक जमाने में ना शायद नेवर लिसन टू मी यार। अच्छा, he wants me to listen to him. He felt you I didn't listen to him. Yes. My younger brother is actually my elder brother at heart. Unfortunately, he was born as my younger brother, so he's dealing with the reality. तो but I am the elder brother, Ishan. तो अभी डायनामिक्स में तुम उसको एडवाइस देते हो, वो तुमको एडवाइस देता है? मैं ट्राई करता हूँ, वो लेता नहीं है। हाँ, फिर मैं वापस ट्राई करता हूँ, फिर मैं अपसेट हो जाता हूँ कि मेरी एडवाइस नहीं लेता है। फिर वो बोलता है
अच्छा बता दे, फिर बोलते नहीं तू गलत है, तो हमारा ऐसे ही चलते रहता है। हमारा डिफरेंस 14 इयर्स है यार, I know रे। 2 साल 3 साल थोड़ी है। मैं तो एक बार गलती से उसको बेटा बोल दिया भाई। अब बेटा तू बोल सकता है, तेरी उम्र उतनी हो गई है। तुमसे एक साथ पढ़ा हूं भाई। हाँ, तो हो गया ना, तेरे बच्चे हो गए अभी, कितने 17-18 साल के बच्चे हैं तेरे। मैं तो गलती से एक्ट्रेसेस को भी बेटा बेटी बोलने लग गया हूं यार, ऐसा हो गया अंदर से। सीरियसली, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। गुड, I don't have better that way than the other way. That's the other way, right? इन सालों में 20 सालों में तुमने क्या क्या सीखा है इन एक्ट्रेसेस से, ठीक है? Okay, Let's do this. let's do this. All right. Kareena Kapoor. Spontaneous, very, very spontaneous, and very relaxed and chilled out, which is amazing. Alia Bhatt. At a very young age, her ambition and her talent was spectacular. So I think I have gained so much acting with her and learned so much from her while I was performing with her. Kiara, I think, has the best attitude. She has a lot of talent. Of course, she's very talented. But what is even better than her talent is her positivity and her attitude and the focus with which she works and the patience that she has had to wait for her time, and the conviction that she has. I feel she has a great attitude in general. Great attitude. Kangana. I think she is one of the finest actors of our generation. Some of her performances have been spectacular. Aakhri lady, Deepika Padukone. Her eyes are like, so big and expressive. So when you're performing with her, you get so much from her eyes. So I think she has very, very expressive, beautiful eyes. People find her gorgeous, but her eyes are just very, very lovely. एक अंगार वाला सवाल, netizens feel कि फर्जी और family man can coexist. क्या लग रहा है ये? I'm sure they can coexist, but then they would be, Amazon would be putting two super hit things together and making it only one thing. I think their goal would be to take two things and make them four things, right? But of course, it's possible for the characters to, because you've created a certain universe and they've created certain subtle commonalities, like certain characters. And there is this moment where, Michael speaks to Shrikant Tiwari's character on the phone when he's walking around. It's a damn funny scene. So possibilities are there. It's really about where it is justified, how much you want to do it. You want to just do like a 5-minute entry or a 1-episode entry. Merging both of them, I don't know. I mean, I would be surprised if they merged these two things. But that'll be exciting, no? But it could have, like, it could be interactive. देखो, एक्सपीरियंस के साथ हम लोग को पता चल जाता है हमारे इर्द गिर्द कौन सी चीज फर्जी होती है जी. What is that one thing जो तुम कहीं जाके तुम्हें पता चल जाता है कि लोग ही फर्जी होते हैं ब्रो. जानवर वानवर सब अच्छे होते हैं, नेचर भी अच्छा होता है, फर्जी होते हैं लोग. अभी कोई तुम्हें ऐसे ही जो होता है ना बकवास वाला कॉम्प्लीमेंट देता है, आदमी मन पता चल जाए कि यार बुलशिट मत कर, ऐसा आ जाता है? आंखें कम झूठ बोलती हैं. आंखों का झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है. तो yeah, but you usually know. But at the same time, I like to believe everybody is good before I think they are bad. I'm more that kind of a person. मुझे ये लग रहा ना रियली अब से ना तुम एक सेशन मोटिवेशनल क्लासेस का भी स्टार्ट करो. मैं बता रहा हूँ. Doesn't pay enough, bro. Oh God! No, but it's more about money, not more about money for you now, right? I already have people in my life who are tired of me giving them gyan, so I think I should just keep my mouth shut. जैसे कहा जाता है कि शायद is one of the most beautiful houses around. लोग कहते हैं. I mean, yeah, they have a nice house, yes. Yeah, और भाई साहब वहाँ बागड़ा भी करते हैं. हाँ, करते हैं. दोस्त के साथ. हाँ. That never changes. That never changes. Never. What do you expect more from life now? देखो हिट फिल्में हो गई है, बच्चे स्वीट है, परिवार ठीक है, क्या है? बहुत सारी चीजें हैं यार. I mean, at 40 you can't start thinking what more is there to expect from life. You can do the same things. The coolest thing somebody said that, usually we say, I got to go to the gym. I got to go to work. I got to go meet that friend. And if we just change one word and start saying, I get to go to the gym, I get to go to work, I get to meet my friends, you'll always be thankful, no? So I think it doesn't matter. I mean, like, if you like certain food, you're happy to eat it every week. If you like certain people, you want to hang with them as often as you can. If you like what you do, you want to do more of it. So if you love what you're doing, if you're engaging with the things that actually make you feel good about life,
then you don't need to do new things. I think what you're doing, you're happy doing them. जाने से पहले एक क्वालिटी जो शायद में थी, जो अब शायद कहता है थैंक गॉड मेरे अंदर नहीं है इतने सालों बाद। बहुत सारी चीजें होंगी। इतने भी बुरे नहीं थे भाई तुम। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब there's always something to learn. I think I have more clarity now. I think I am surer of my choices and who I am. I think the biggest thing is that I think I am comfortable with who I am much more than I was earlier. Earlier, I always felt a bit lost. I wanted to make other people happy. I don't care about that. And I feel much happier now. And how long was this back, ये lost वाला phase? I think in the last 4-5 years, I would say that has changed. So I think maybe from the time I got married, then COVID, and now kids, and now this, and then so I think the last 7-8 years have played a major role in me kind of finding myself and being content with who I am and where I am, and I'm happy. क्या बात है भाई, and I'm sure you will never be lost in the future क्योंकि फैमिली अच्छी है, हम जैसे दोस्त है जो ओवरसाइज जैकेट पहन के आते हैं बहुत चीजों को कवर करने के लिए, and we have friends like you giving us a reality check also. अब तू लॉस नहीं होगा यार, पक्का। I hope so, brother. I really mean that. जाने से पहले विजय सेतुपति ने आपको कुछ तमिल डायलॉग सिखाया कि नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ सिखाया नहीं एक्चुअली उनके साथ। अब जब शो रिलीज हो गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि हमने एक ही दिन शूटिंग की थी साथ में। तो बट आई विश टू वर्क अ लॉट मोर विद हिम, और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे टेक मी टू योर वर्ल्ड, मुझे आप लेके जाओ into maybe call me for a film or tell me, I'll do something. I'd love to learn because it was so challenging for him to do the language so well. So I think that's again another interesting challenge if one wants to.